Hello everyone, this is Shaman. Welcome to my channel sgtute. In my last lecture, I have explained you about different types of operators such as assignment operator, arithmetic operators, relational operators, bitwise operators and so on. If you have not visited yet, then you can click on the I button or you can see the link in the description section. Today we will start with the topic operator precedence, type conversion, and we will see a simple program on how to write a code to display a message. So precedence, it states that in an expression when two or more operators of different precedence occur, then the operator with higher precedence is applied first then the other operator. तो ये precedence हमारी होती है एक प्रायोरिटी. लेट से हमारे एक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर प्रेजेंट हैं, तो अब जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो हमारा पहले ऑपरेट होगा और जिसकी प्रायोरिटी हमारी कम होगी वो हमारा बाद में ऑपरेट होगा. नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी. दिस रूल स्टेट्स दैट इन एन एक्सप्रेशन इफ टू और मोर ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस लेवल अपीयर्स then the expression should be solved according to the associativity of operators in the expression. हमारा एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर प्रेजेंट हैं एक ही एक्सप्रेशन में और सारे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है, तो उस केस में द ऑपरेटर अपीयरिंग द फर्स्ट इन द एक्सप्रेशन विल ऑपरेट फर्स्ट एंड देन द फॉलोइंग ऑपरेटर्स विल इवेल्युएट. Now, how can we determine the precedence of the operators? The higher precedence operators are division, modulo division and the multiplication, and the lower precedence operators are plus and minus. For example, we have declared three variables a, b and c and initialized them values 10, 5 and 3. In our example A, here the expression is given x is equals to a plus b minus c multiplied by b. तो हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाइड ऑपरेटर जो है ये हमारा हायर प्रेसिडेंस का है और प्लस एंड माइनस आर ऑफ लोअर प्रेसिडेंस. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंस हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद प्लस और माइनस ऑपरेट होंगे. वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 and 5 that is 15 and the values of a and b remain same, and at last we get the output x is equals to 0. In our second example, the expression is given x is equals to b minus a plus c. अब यहाँ पर हमारा माइनस और प्लस दोनों ही लोअर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं, तो हमारा एसोसिएटिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ऑपरेटर सबसे पहले प्रेजेंट है एक्सप्रेशन में वो इवेल्युएट होएगा, उसके बाद जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो इवेल्युएट होंगे. एंड हेंस द फर्स्ट ऑपरेटर माइनस साइन इज ऑपरेटेड फर्स्ट एंड गिव्स द रिजल्ट -5 एंड वी गेट x इज इक्वल्स टू -2 एज आर आउटपुट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टाइप कन्वर्जन्स. इट रेफर्स टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर. अब किसी भी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ये जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है इट इज ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग. नंबर 1, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. When the type conversion is performed automatically by the compiler without any programmer intervention, then it is known as implicit type conversion. अब this means कि यूज़र को या प्रोग्रामर को कोई भी ऐसा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है जिससे टाइप कन्वर्जन हो, ये डायरेक्टली हमारा कंपाइलर करता है. फॉर एग्जाम्पल, इंट i इज इक्वल्स टू 5. हमने एक वेरिएबल i डिक्लेयर करा और उसे 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी. नेक्स्ट वेरिएबल इज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप दैट इज f एंड वी हैव रिटन f इज इक्वल्स टू i. अब यहाँ क्या होगा, हमारा कंपाइलर देखेगा कि i वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है, f वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है और f वेरिएबल में हमें किस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है. सो इट इज ऑल डन बाय द कंपाइलर. नाउ देयर इज अ कन्वर्जन हायरार्की which tells the order of data type on the basis of which are type conversion further divided as promotion and truncation.
अब ये कन्वर्जन हायरार्की हमें बताती है कि डेटा टाइप का लेवल क्या है, ये लोअर डेटा टाइप है या फिर एक हायर डेटा टाइप है, एंड उसी के बेसिस पे हमारे दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं, प्रमोशन एंड ट्रंकेशन. प्रमोशन इज द टाइप कन्वर्जन वेयर द वेरिएबल विद लोअर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू अ हायर डेटा टाइप. अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक पर्सन कोई जॉब कर रहा है, पहले वो था मैनेजर और अब वो हो गया जनरल मैनेजर, तो उसका प्रमोशन हुआ है, एक नीचे वाली स्टेट से अपर स्टेट पे गया है. सो वी कॉल्ड इट एज अ प्रमोशन. यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, एक लोअर डेटा टाइप को हम कन्वर्ट करते हैं हायर डेटा टाइप में. द सेकेंड वन इज ट्रंकेशन, असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम हायर डेटा टाइप टू लोअर डेटा टाइप इज सेड टू बी ट्रंकेशन. अब ट्रंकेशन हमारा प्रमोशन का अपोजिट हो गया, in which we convert the higher data type to the lower data types. Let's see the sequence of these data type levels. So the char or short is the lowest data type, and as we move in the upward direction we get the highest data type, that is long double. तो जब हम long double से double पे float unsigned long int पे आते हैं, this we call truncation. एंड जब नीचे से ऊपर जाते हैं इट इज कॉल्ड प्रमोशन. सेकेंड टाइप कन्वर्जन इज नोन एज द टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. हेयर द डेटा टाइप कन्वर्जन इज डन बाय द यूजर, विच मीन्स यूजर को एक कोड लिखना पड़ेगा या फिर उसे बताना पड़ेगा कि हमें किस डेटा टाइप की वैल्यू किस डेटा टाइप में चेंज करनी है. For explicit type conversion we use the cast operators. ये जो parentheses हैं ये हमारे होते हैं cast operators. The syntax of type casting is variable name is equals to data type expression. Let's understand with an example. Here we have declared two integer variables I and j and initialized some values, that is 23 and 5. Another variable d is of data type float. अब यहाँ पे हमने क्या करा, डी वेरिएबल में हम i अपॉन j एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करवा रहे हैं, जिसमें हमने यूज करा है टाइप कास्टिंग का. दैट इज वी वांट कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका आउटपुट हमारा फ्लोट वैल्यू दे. सो वी हैव राइट द डेटा टाइप फ्लोट इन दिस कास्ट ऑपरेटर्स एंड हेंस वी गेट द आउटपुट इन फ्लोट डेटा टाइप. So these two are the type conversions basically needed to convert the one data type into another. Now let's start with what are the requirements or what are the necessary conditions to write a code and to start the coding. Standard input output in C. While writing a C program, taking input and displaying the output is an essential step. अब हम कोई भी अपना एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमारी दो मेन चीज होती हैं कि हम यूजर से क्या इनपुट ले रहे हैं और हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है. While working with input output functions in C, there are two important streams that are standard input and standard output. Standard input output functions can be divided into two categories: unformatted input output functions and the formatted input output functions. Let's discuss about each of them. The unformatted input output functions. These are the functions which do not write or read using a particular format. मतलब इनका कोई भी particular format नहीं होता जिस पे ये work करें. For reading or writing a single character, we can use the functions like getChar and the putChar, where the getChar is used to take the input from the user at runtime and putChar is used to display the value which is inputted by the user. For reading and writing a string, ये जो getChar और putChar होते हैं, these are only allowed to take a single character. But if we want input any string or to display any string, we use the function getS and putS, where the getS is used to take the input from the user and putS is used to display the string inputted by the user. I will explain these all four functions with the help of an example while writing a code. The second is formatted input output functions. Mainly it refers to an input data that has been arranged in a particular format. अब ये जो formatted input output function होते हैं ये एक particular format पे work करते हैं.
It is possible to read formatted data in C using scanf function. अब यहाँ पर एक फंक्शन होता है that we called scanf. It means scan formatted. अब ये फंक्शन क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है और उसे वेरिएबल में स्टोर करवाता है. Its syntax is scanf format string and variable. Here the and symbol is the address operator which stores the address of a given variable. अब जो भी वैल्यू यूज़र ने इनपुट करी वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर होएगी. Here this format string involves format specifiers which includes the conversion character that is percentile symbol and the data type character. अब ये जो data type character होते हैं, these are used to specify which type of data is stored in any variable. For example, if we have integer value, we have to use D character. For float, we use F and so on. In this format string, we can use the new line tab, the blank space tab or any other tab. Now I will show you the practical of how to write a C program code to display a message hello world, and we will also write a short program with the examples of getS, putS, getChar or putChar that are the unformatted or the formatted input output functions. Here I am using the platform Turbo C++. In my previous lectures I have told you about the structure of a program which includes the documentation section. So in the documentation section we include the required files. So that is hashtag include stdio.h. अब ये जो stdio है, it means standard input output. It provides us some functions which I will tell you in the program. The second one we include is include conio.h. अब ये conio क्या होता है? Conio means console input output. It also provides some functions. The second part is the main function. Now we will create a main function of void data type in which we will declare all our variables and the executable part. Since we have to display the message, we use the character data type having a variable message, and here we have to provide the number of characters. Since it is a string, it is a sequence of characters. अब हमें ये बताना होता है कि कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए उस स्ट्रिंग में. After our initialization and declaration part, we add one function that is called clear scr. अब ये फंक्शन कहलाता है clear screen function. The file conio.h provides us this clear scr function. अब इसका काम क्या होता है? Let's say at the run time हमने यूज़र से इनपुट लिया, बट उस इनपुट में कुछ एरर्स आ गई एंड वी हैव टू टेक अगेन अ न्यू इनपुट. तो जब तक हमारी पहले वाली स्क्रीन क्लियर नहीं होगी वो हमारे साथ एज इट इज़ आगे चलती रहेगी. सो वी यूज़ द क्लियर scr फंक्शन जो कि पहले वाली स्क्रीन को क्लियर करता हुआ चलता है. नाउ वी नीड अ वैल्यू फ्रॉम अ यूज़र. अब यूज़र को भी तो पता चलना चाहिए कि उसको कुछ एंटर करना है. सो वी डिस्प्ले अ मैसेज यूजिंग द printf फंक्शन. printf फंक्शन हमारा यूज़ होता है कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए. सो हेयर वी विल राइट एंटर एनी वैल्यू और वी स्पेसिफाई द एंटर एनी स्ट्रिंग वैल्यू to be displayed, and here we use a new line tab that is denoted by \n, and we close the parenthesis and end with it a semicolon. अब हमें वैल्यू यूज़र से रिट्रीव करनी है और उसे स्टोर करवानी है इस मैसेज वेरिएबल में. सो फॉर दिस वी यूज़ द scanf फंक्शन. अब scanf में मैंने बताया था वी यूज़ द फॉर्मेट स्ट्रिंग विच इंक्लूड्स द कन्वर्जन कैरेक्टर एंड वन डेटा टाइप कैरेक्टर. अब कन्वर्जन कैरेक्टर तो हो गया हमारा परसेंटाइल, बट हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है. सो वी यूज़ द डेटा टाइप कैरेक्टर s एंड अ वेरिएबल नेम विद इट्स एड्रेस ऑपरेटर. अब एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है? जो भी वैल्यू आई है इस मैसेज वेरिएबल में उसे स्टोर करवाता है जहाँ जहाँ पे ये वेरिएबल है. एंड एट लास्ट वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू स्टोर्ड इन आर वेरिएबल मैसेज. सो वी कैन राइट द एंटर्ड वैल्यू is and again format specifier that is percentile s.
and the variable name with a comma. At last we use the function getch. अब ये getch क्या होता है? It retrieves any character and displays our output. ये भी हमारा जो है प्रोवाइड होता है कोनियो फाइल से. So this is the only reason why I have opted this platform Turbo C++, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब समझे कि हम फाइल कैसे इंक्लूड करते हैं, क्लियर SCR फंक्शन का क्या यूज़ है या फिर getch फंक्शन का क्या यूज़ है. Now we are done with the code and ready to compile. For compile we can do the compile button or we can use the Alt plus F9 combination. So we compile and we get the success. Now we run this program using the Control F9 combination. Here we get enter any string value to be displayed. अब हम यूज़र हैं, अब हमने वैल्यू एंटर करी, that is hello world and entered value is hello world. अब यहाँ पे पहले तो हमारी वैल्यू इनपुट हो गई, उसके बाद डिस्प्ले. So this is a simple program of how to print hello world. So today we have covered the topic operator precedence, associativity, type conversion, etc. In my next lecture I will come up with an example of puts, gets, putchar and getchar, and will start with the decision making statements. If you like my video, press the like button, share it with your friends, and if you are new to my channel, please do subscribe for the upcoming sessions. Thank you, have a good day, and don't forget to hit the bell icon.